So we are starting with the third session on permutations combinations. In the first session, we saw principles of OR, principles of AND, and many examples. We covered some questions on roots and networks as well. I gave you general formula as well, general approach. Second session, we saw permutations, combinations, the formula of P and C. When will they work? When will they not work? Some questions on that. Arrangements along a triangle, rectangle, hexagon. That is geometric arrangement. Today, our focus will be more towards traveling on routes or grid, counting squares, counting rectangles. Then by the end of today's session, or maybe tomorrow, we'll cover principles of counting and distribution, which is advanced level PNC, and we see more and more such questions in CAT and XAT nowadays. Principles of counting as well as group formation distribution. So we are going to start with how to travel on a grid. Usually questions are like a point is defined, let us say A, another point is defined, let us say B. A person wants to go from A to B by traveling minimum distance. All the lines are of equal length. You might feel this is a longer line, but usually the grid is a square. All the vertical, horizontal lines are of equal length. So if one person has to travel minimum distance, the common sense is you have to go right or you have to go up. Always up or right, up or right. You should never take a down turn or never take a left turn. To minimize the distance, you should always go, because I want to go from A to B. Minimum distance by default means up and right. If the minimum distance criteria is not given, the question will tell you in such a case the person can only go up and right. If I want to go from A to B, if I reverse, I want to go from B to A. That means I can go only down and left. So the question will very clearly tell you where do you want to go, which side do you want to travel. You want to go from A to B, minimum distance, up and right are the only two turns you should take. If minimum distance phrasing is not used, you want to go from A to B, the question will tell you up and right are the only turns allowed. Same goes B to A, minimum distance down and left. If that is not mentioned, if that is not given, you can take down and left. So let me start the counting part. If I want to go from A to B, I must take 1, 2, 3, 4, 5, and 6. I have to take a right turn 6 times. Now, whether I take that right turn here or if I take that right turn here makes no difference. I must take 6 right turns. 1, 2, 3, and 4. I will have to travel upwards 4 times. So as a formula, I wanted to learn the formula first. The formula is you want to go from A to B. It is always right plus up, combination up, or right plus up, combination right. Both are going to be equal. In this case, it is 10 combination 6 or it is 10 combination 4. So you can travel in 10, 9, 8, 7. 4 numbers in the reverse order. 4, 3, 2, 1. Cancelled 3 times. You can travel in 210 ways from A to B. From A to B, you can travel in 210 ways. Now, how did we reach this formula? You should learn that. Kabhi aay kaam aayega. If the question is customized, you should learn that.
Now see, you have 10 decisions to make. I'll draw it here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Out of these 10 decisions, you must make 6 right decisions and 4 up decisions. Observe: right, 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 right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So others will be up, 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 up. Right, 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 right. So it will be up, 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 up. I'll tell you what I'm doing. Give me a minute. Right, 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 right. 5. One more, let us say. Right, up, 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 up. So you see, there are 3 arrangements I have written. This is first, this is second, and this is third arrangement. I'm going to follow these arrangements. I'm taking right turn. So right here, then up, then 2 rights, 1 right, 1 more right, then up, then right, then up, then 2 rights, and then up. So by following this arrangement, I have managed to travel from A to B. Let me try the second arrangement. Let me try this one. I'm going up. Look at the blue line. Up, right, 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 up, right, up, right, up, right. So by following this sequence, I can go from A to B. Let me try the third one for you, the final one. I'm taking a right turn from here. Right, up, right, up, up, right, up, right, right. It should be right, right, right. There is one extra up here. It should be 4 ups and a right. So you see, in all 3 cases, I was able to go from A to B. What I'm doing is I'm jumbling. I have got 6 R's, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and I've got 4 ups. So I'm basically arranging 10 objects. Out of these, 6 are same and 4 are same. This is basically 10 combination 6 or 10 combination 4. This is how we reach the formula. There are 6 decisions of right, 4 decisions of up, 6 right, 4 up, combination R. 6 right, 4 up, combination up. So make sure you understand this theory. I'll give you 2 minutes to copy this down. Copy this down. Now, what if there are conditions put on it that you must pass through a point, you cannot pass through a point, and so on and so forth. In all such questions, if the grid is complete, count the number of right turns, count the number of up turns, whichever is the smaller number, R or U, whichever is the smaller number, you put it here. That is how you travel on a grid. Now, what if the question says you must pass through a specific point? Let us say you're going from A to B, but you must pass through C. So the question will be go from A to B via C. C से होते हुए जाना. Such questions have been seen in CAT maybe twice or thrice by now. So what you do is you treat it as 2 separate grids. One grid is between A and C.
and the second grid is between B and C. You don't even look at the other parts of the diagram. These are the two grids that we are going to travel on. So you count 1, 2, 1, 2. There are 4 decisions to be made. You take any two. Up plus right combination, up or right, both are 2. So I have traveled from A to C. From C, you again count 1, 2, 3, 4. There are 4 rightwards move, rightwards, and 1, 2. So this will be 4 plus 2, 6, combination 2. So C to B. You want to go from A to C and from there B to C. So we multiply cases. So what is 4C2? 4C2 is 6. What is 6C2? It is 15. So in 90 ways, you can go from A to B via C. Take your time, observe. You have to focus only on the portion where there's a dot C from A to C and B to C, B to C to B. You don't have to consider these parts. Don't even be bothered about these. They do not matter. When you have to pass through a specific point. If I reverse the question, please observe. I'm writing it on the lower left corner. It's a separate question. The question is, in how many ways can a person go from A to B avoiding point C? So in the previous question, if you see, how many ways were there? 210 ways. What you do is, total ways are 210. And now because I am avoiding C, I will actually find out ways of passing through C. Minus 90 ways of passing through C. So what this leads to is 120. There are total 120 ways in which I can avoid the journey through C. So what do we need to do in all such questions? पहले आप total ways निकाल दो, फिर वहां से गुजरने के ways निकाल लो जो avoid करना है. C को avoid करना है. We need to avoid C. Good. Take 2 minutes, copy this down. The first example is, in how many ways can I pass through C? Second example is, in how many ways can I go from A to B avoiding C? We have couple of more variations. Now, in how many ways can a person go from A to B through shortest path? So you see, in a rectangle, if this is, let us say 3, this is 4, the diagonal is 5. Even if it is 3 and 3, diagonal will be 2 root 3. So when there is a road drawn like this, the question will tell you there is a bridge connecting C and D, or there is a path connecting C and D, or there is flooding in the area CD, you can use the bridge, something like this, or they will say shortest distance. Rather than traveling on two sides of the rectangle, two sides of the square, you use the diagonal, because
diagonal will be less than the addition of sides. That is the property of triangles. A triangle can only be formed when addition of two sides is more than the third. So in this particular case, the length of CD will be less than adding these two lengths. So now, because the shortest word has been used, so what I will do is I will travel from A to C, then C to D, then D to B, step by step. So what we do here is we again count 1, 2, 3, 1, 2. So I will need 3 right turns and 2 up turns for this. Total turns are 5. So 5 combination 2. C to D, there is one path. So there is one way to travel from C to D. D to B, 1, 2, 1. There are 3 total turns, 2 right turns and 1 upward turns. 3 turns are there. I can take upward turn. What is the meaning of this? Whether you want to take upward turn here, here or here, you have to take one upward turn. So there are 3 ways. What is 5C2? 5C2 is 10. So in how many ways can you travel from A to B with the shortest distance covered? 30 ways. Or in how many ways can you travel from A to B, including CD? Including CD, 30 ways. Take a minute, copy this down. What is the reason behind this? The shortest word has been used. Diagonal will always have lesser length than the other two sides combined. Good. Moving on. Now this question has appeared in CAT several years back. A person should not be able to or should not enter into a specific region. You need to go from A to B, but this region, there is biohazard, there is a some politicians rally going on which can lead you to brain damage, so you must avoid this region. So in how many ways can you go from A to B by avoiding the shaded region? Take 2 minutes, give it a try. Socho. How will you avoid going into this region? Even if you're watching this as a recording, make sure you take enough time to think. Don't move forward कि sir तो explain कर देंगे, because you must clear the exam, you must put in the desired effort. Notice, don't worry about lines. Earlier two methods I have shown you of how to go through a point or how not to go through a point. Don't worry about the, I'll say, grid lines here. Focus. Let us say this is the blue line. If somebody has to enter, let us say this person by mistake enters that zone,
can go upwards or can go rightwards, whatever is the case, this person enters that zone, this person, the blue line. Or somebody traveling horizontally from here enters that zone, yahan se. Then can go forward or can go upwards, can go whatever direction, enters. Do you notice something common? Anyone who enters the region will go through this dot. कोई भी अगर इस region में घुस गया, so that person will be going through that particular dot. वो इस dot से गुजर रहा होगा. So we need to avoid passing through that dot. अगर इस dot से आप नहीं गुजर रहे हो, तो you cannot enter the region. अब मैंने इसको बोल दिया C. Let us call this C. So 1, this is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 right turns must be made. Then 1, 2, this will be 7. 7 right turns must be made. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 3 upward turns must be made. So this is 9 decisions, 9 combination 3. You have reached here. Then 1, 2, 1, 2, 3. That is 5 combination 2. So in this many ways you pass through the point C. हमारा approach उल्टा होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So total 15 turns are there. 15 combination 7 minus 9 combination 3, 5 combination 2. In this many ways you cannot pass through the point C. उल्टा किया हमने total ways निकाल दिए and we found out ways of passing through C. Make sure you're writing this down. Total ways of traveling and number of ways of passing through C. Subtract those. Mention all of this. Now your mind will come to another question, sir, what if there are multiple points? So there are more crossovers, more intersections in the region. It becomes further more and more difficult. So I hope you have written this down. You have written this down. If I was to frame a question of similar kind, let us say a person could not go through this entire portion. A person could not go through this entire shaded region, this region, complete region. So now there are how many points? There are 2 points. A person cannot go through, must not go through this and this point. So see, this will turn into a thoda sa set theory kind of question. Passing through P, passing through Q. First, what you will find? Passing through P ways. You will find passing through Q ways. You will find ways of passing through both P and Q. So you will add these ways, passing through P, passing through Q. You will subtract this. Set theory kind of way. If somebody goes through P, if somebody goes through Q, there's a possibility somebody went through both. तो set theory में क्या करते हैं? You count individual ways and then subtract passing through both. अब ये minus हो जाएगा. This will be, if I call it X, this will be total ways
from A to B, which was what? Which was 15 combination 7 minus x. ये आपका आंसर होगा. एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा. ways of passing through P, ways of passing through Q, ways of passing through both. तो पहले दो को ऐड करके तीसरे को माइनस करना है और बाद में इसको भी यहाँ पे माइनस कर देना है आपको. It's a very logical approach. I hope you are writing down all of this. So moving on. At any point you can pause the video, go through the concept, rewind, go through the concept. Make sure आप notes अच्छे से बना रहे हो. PNC पिछले 3 साल से थोड़ा कम आया है. We are expecting it will make comeback this year. Now, how to count lines, triangles, quadrilaterals when points are given. Points are given in a plane. How do we count lines, triangles, and quadrilaterals? So let me start in this manner. There are some points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listen to the language carefully. No 3 points are collinear. No 3 points are collinear. कोई भी 3 point एक ही line पे नहीं है. This kind of condition is given to you. You will be told about the nature of points. They are collinear, non-collinear, something like this will be given to you in the example or in the question. No 3 points are collinear. So how do we form a line? Every time you join, again, line is going to infinite. You join these two, it's a line. You join these two, it's a line. Go to infinite, no overlapping. You join these two, it's a line. So out of the 10, selecting 2 points is the number of lines. So what is that? 10 into 9 upon 2 into 1. There are 55 lines. There are 55 lines. How do we form a triangle? See, if I select any 3 random points, I select these 3 random points, it becomes a triangle. I select these 3 random points, it's a triangle. I select these 3 random points, it's a triangle. Every time out of 10 you select 3 because they are not collinear. They are not collinear. Every time a new triangle is being formed. 10, 9, 8 upon 3, 2, 1. Cancelled 4 times, cancelled 3 times. There are 120 triangles. In this structure, there are 120 triangles that can be formed. So in a line, you need 2 points. In a triangle, you need 3 points. In a quadrilateral, how many points will you need? Common sense as it dictates 1, 1, 2, 3, 4. Anytime you select 4 points, it leads to a quadrilateral. See, it might not look like it, but this is also a quadrilateral. A, B, C, D. It's a quadrilateral. So out of 10, selecting 4 leads to quadrilaterals. So 10, 9, 8, 7 upon 4, 3, 2, 1. 4 into 2, 8 cancelled. 3 into 9, 3 into 3, 9 cancelled. 7 into 3, 21 into 10. There are 210 quadrilaterals. Take your time, write this down, jot this down.
हाउ मेनी क्वाड्रिलैटरल्स कैन बी फॉर्म्ड, आप 4 पॉइंट सेलेक्ट करो। तो अगर ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा, लेट अस से वी हैव टू क्रिएट अ पेंटागन और हेक्सागन और समथिंग ऑफ दैट नेचर, तो जितने पॉइंट्स हैं उतने आपको क्या लेने पड़ेंगे, सिलेक्शंस करने पड़ेंगे। अगर पेंटागन है यू सेलेक्ट 5, हेक्सागन है यू सेलेक्ट 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। व्हाट इज द की कंडीशन? नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। I hope you have written this down. What is the next variation we can have? Some of the points are collinear. 1, 2, 3. Let us say 3. Let us say one more. 4. There are 4 collinear points. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listen to the language. There are 12 points in a plane, of which 4 are collinear. 4 are collinear. 4 lie on the same line. So this becomes a little tricky. When you want lines, normally we say out of 12, select any two. You will have your line. But if I name these A, B, C, D, do you understand? When you select AB and you extend, you select CD and you extend, you select BC and you extend. Out of these 4, whichever two you select, you are getting the same line. So when you subtract this, what have you done? You have removed same line. Out of ABCD, you select any two. It is the same line. लेकिन एक line तो है ना? There is one line. So that will be added. That is the one line that must be added. ये मिस हो जाती है लोगों से. People forget this. That is number of lines. Again, what is the idea? A line goes to infinite. Infinite तक जाती बेटा एक line. So out of these four, आप जब दो सेलेक्ट करते हो, लेट से आपने AC सेलेक्ट कर दिया और आप उसको इनफाइनाइट तक खींचोगे, तो वही AD बन जाएगा, वही BC बन जाएगा, वही BD बन जाएगा, वही AD बन जाएगा. So you subtract that many lines, 4C2. लेकिन एक तो बनेगी ना, एक तो बनेगी, +1. How do we count triangles? 12 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करो. इट शुड बी अ ट्राइंगल, इट मस्ट बी अ ट्राइंगल. लेकिन अगर आपने इन चारों में से 3 सेलेक्ट कर दिए, इट इज नो लॉन्गर अ ट्राइंगल. ये आपका आंसर है. और एक तरीका है ट्राइंगल्स गिनने का. व्हाट यू डू इज, आप मैन्युअली कैलकुलेट करो ये कितने पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स. 8 में से कोई भी 3 पिक करा तो ट्राइंगल तो बनना ही बनना. या फिर आपने 8 में से कोई 2 पिक करा, लेट अस से आपने इन दोनों को पिक करा, और ऊपर के 4 में से अगर आपने कोई एक पिक किया, सो आउट ऑफ द टॉप 4 यू सेलेक्ट 1. और व्हाट यू कैन डू इज, आप ऊपर के 4 में से 2 सेलेक्ट कर लो, लेट अस से CD सेलेक्ट कर लिया और नीचे का एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो. ये भी ट्राइंगल है. 4C2 इंटू 8C1, ऊपर के 4 में से 2 और 8 में से 1. Now you have to decide in exam what is easier for you. क्या ये easy है आपके लिए कैलकुलेट करना और ये easy है? Totally up to you. You decide. This many number of triangles can be created. 12C3 minus 4C3. इन 4 में से ट्राइंगल नहीं बन सकता in this manner. और आप एक एक करके करो. इन 8 में से 3 सेलेक्ट किए, इन 8 में से 2 सेलेक्ट किए, 4 में से 1 सेलेक्ट किया, ऊपर के 4 में से 2 सेलेक्ट किए और नीचे के 8 में से 1 सेलेक्ट किया. ऑल ऑफ दीज आर वैलिड.
How many quadrilaterals can be formed? Number of quadrilaterals. तो ये थोड़ा सा फास्टर लग रहा है. 12 में से कोई 4 सेलेक्ट करना या फिर 4 में से 4 सेलेक्ट करना. थोड़ा ध्यान देना अभी, थोड़ा ध्यान देना. या फिर और अगर आपने ऊपर के 4 में से 3 सेलेक्ट किया और नीचे के 8 में से 1, तो भी तो क्वाड्रिलैटरल नहीं बनेगा ना. सो डू यू सी, जब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जा रहे हैं, it is becoming difficult to take care of the linear or collinear part. क्या ऑब्जर्वेशन है मेरी यहाँ पे, क्या लॉजिक लगा रहा हूं मैं यहाँ पे? इफ यू पे अटेंशन, मैं आपसे कह रहा हूं, लेट अस से मैंने ये तीनों सेलेक्ट कर लिए, मैंने ए बी और सी को सेलेक्ट कर लिया, ए बी और सी को, उसको मैं नीचे ले आके यहाँ कनेक्ट कर दिया. इज इट अ क्वाड्रिलैटरल? मैंने बी सी और डी को सेलेक्ट कर लिया, बी सी और डी को सेलेक्ट कर लिया और मैंने उसे नीचे लाके यहाँ कनेक्ट कर लिया. इज इट अ क्वाड्रिलैटरल? क्वाड्रिलैटरल नो. तो जितने ज्यादा साइड होंगे उतने एक्सेप्शंस बनते जाएंगे, तो उतना आपको नेगेट करना पड़ेगा. टेक योर टाइम, टेक 2 minutes, copy all of this down. How many quadrilaterals, how many triangles and so on so forth can be formed? Take 2 minutes. Make sure ये clear है. If not, rewind and rewatch. Moving on. Now, how many diagonals does a polygon have? In CAT, I have seen 2 questions based on this so far. Once directly asking for diagonals or diagonals given, asking for internal external angle of a polygon, तो geometry लगता है. Another in a different manner. I have kept both questions in your class sheet. We'll see both. How do we count diagonals? तो 2 तरीके हैं. एक है through combinations, एक है through common sense. Observe, ये मैंने बनाया आपके लिए एक, let me not even put this as a diagram. मैंने आपके लिए स्क्रीन पे ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने आपके लिए 6 वर्टाइसेस बना दिए. अब जाहिर सी बात है, इन्हें कनेक्ट करके क्या बनेगा? हेक्सागन बनेगा. सो नो 3 कैन बी कोलिनियर, क्योंकि दीज आर वर्टाइसेस, और अगर 3 वर्टाइसेस कोलिनियर हो गए तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना. पॉलीगॉन में बेंड होना चाहिए, पॉलीगॉन में बेंड होना चाहिए. तो ये हेक्सागन के वर्टाइसेस हैं. कैन आई से आउट ऑफ 6 पॉइंट्स selecting any 2 is a line. Out of these, selecting any 2 is a line. जैसे ये एक लाइन है, ये भी 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 एक लाइन. These are all lines you can select. 6C2. 6 is what? Number of vertices. Now, can I say out of these lines, थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पर है D, this is D. ये जो लाइनें मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइनें, one of the lines is AB, one is BC, one is CD, one is DE, one is EF and one is FA. ये जो 6 लाइनें हैं, these are sides and sides are not diagonals.
एवरीथिंग एल्स इज अ डायगोनल. आप यहाँ खींच लो, इट इज अ डायगोनल. आप यहाँ खींच लो, इट इज अ डायगोनल. लेकिन जब आप B से लेके C खींचोगे, इट इज नो लॉन्गर अ डायगोनल. So this is the general form of a formula for counting diagonals. N combination 2. N is the number of vertices. N is the number of vertices. Combination 2 minus N. ये होता है आपका number of diagonals. तो थोड़ा rearrange अगर मैं कर दूं, N into N minus 1 by 2 minus N. It becomes N square minus N minus 2N by 2. मैंने इसको मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया. So you notice here N is common. N into N minus 3 by 2 is the number of diagonals. N into N minus 3 by 2 is the number of diagonals. Now there is one more way to reach the same conclusion in a slightly different manner. आप ये लिख लो, ये समझ लो. Out of n points, select any two. तो ये आपके हो गए number of lines minus number of sides is number of diagonals. Now I can complicate this. I can ask you how many diagonals are there in terms of length. If it's a regular polygon, how many diagonals will there be in term of length? तो difficult हो जाएगा फिर आपके लिए handle करना. Another way to derive the same result is, I want you guys to learn as much PNC as possible. Let us say this is point B. Now I'm focusing only on A. Only on A. Can A form a diagonal with itself? No. Can A form a diagonal with the adjacent point? No. So if there are n points, if there are n points in the plane, a point cannot form a diagonal with itself or its neighbors. So this point A can form diagonal with n minus 3 points. This point A can form a diagonal with n minus 3 points. So how many points are there like A? Like A, there is B, there is C, there is D, there is E, there is F. So there are n points like A. Now, please observe. In this, the diagonal, let us call it A to C, has been counted one more time as C to A. A diagonal A to E has been counted twice. एक बार A से E और एक बार E से A. So same diagonal has been counted twice. So number of diagonals will be n into n minus 3 by 2. ये minus 3 क्यों आया? Logically speaking, the logic behind this is a point cannot form a diagonal with itself or two of its neighbors. So if there are n points, so a point can form diagonal with n minus 3 other points. दूसरे n minus 3 points of diagonal बना सकता है. So in this manner, ऐसे और कितने पॉइंट्स से आपने A को देखा तो B, C, D, E, F ऐसे टोटल 6 पॉइंट्स हमारे पास हैं. So it can form a diagonal with other n minus 3 points. ऐसे 6 पॉइंट आएंगे. 6 into 6 minus 3. Why are we dividing by 2? क्योंकि कोई कोई पॉइंट डबल काउंट हो गया. ठीक है, टाइम लिख लो इसको. We'll move on from this.
Moving on. Now, how do we count number of squares, number of rectangles when the grid is square, when the grid is not square? There have been questions in which you have to count squares or count number of moves required in a chess board. And to answer that, you have to first create squares. ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले, तो मैं सबसे एलिमेंट्री लेवल पे शुरू करता हूं. How many squares do you count? All sides are equal. How many squares do you count? 1. How many squares do you count in this one? How many squares do you count in this one? Don't be hasty. Take a minute. आप बताओ कितने स्क्वायर आप गिन पा रहे हो इन डायग्राम्स में? How many squares can you count in these diagrams? इसका अलग आंसर बताओ, इसका अलग आंसर, इसका अलग, इसका अलग. Go on. पहले मैं सिमेट्रिक ग्रिड बना रहा हूं. सिमेट्रिक ग्रिड मीन जितने हॉरिजॉन्टल उतने वर्टिकल बॉक्सेस. This is 4 by 4. The one before that is 3 by 3. देखो, there is only one square. अब ना मैं दो चीजें काउंट करूंगा. मैं डायमेंशन पे भी ध्यान दूंगा और मैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स पे भी डायमेंशन पे ध्यान दूंगा. देखो, ये एक एक यूनिट की लेंथ है. इफ देयर इज 1 यूनिट लेंथ, देखो ये एक यूनिट लेंथ है, ये एक यूनिट लेंथ है, तो ऐसे आप काउंट करोगे तो 4 स्क्वायर्स बनेंगे. देयर आर 4 स्क्वायर्स. अगर आप डायमेंशन एक यूनिट का लेते हो तो 4 स्क्वायर्स बनेंगे. लेकिन अगर आप इस पूरे को गिनते हो, इस पूरे को आप वन साइड बोलते हो, वन साइड, तो आपने डायमेंशन कितना ले लिया? 2 यूनिट का डायमेंशन ले लिया. तो ऐसा भी तो एक स्क्वायर बनेगा ना, एक बड़ा स्क्वायर. देखो आप यहाँ पे देखो, आई एम फोकसिंग ऑन टू थिंग्स, डायमेंशन एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स. अगर आपने एक यूनिट का डायमेंशन लिया, देखो तो ये एक स्क्वायर है, 2 3 4 5 6, ऐसे 3 into 3 स्क्वायर्स. देखो हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल 3. अब थोड़ा संभल के, आप जब 2 यूनिट का साइड लोगे, 2 यूनिट का साइड, मैं आपको ध्यान दिलवाता हूं. ऐसे गिनते हैं. देखो ऐसा हॉरिजॉन्टल आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसा हॉरिजॉन्टल आपने 2 लाइन ड्रॉ किया, तो हॉरिजॉन्टल 2 डब्बे बनेंगे 2 साइज के. वर्टिकल देखो आप यहां से लेके यहां तक, ये एक डब्बा बना और ये दूसरा डब्बा बना, तो आपके बेटा 4 डब्बे बनेंगे. आई विल ट्राई टू बी थॉरो. अलग अलग कलर यूज करते हैं. ये देखो, ये 2 यूनिट डायमेंशन का एक बॉक्स है, ये 2 यूनिट डायमेंशन का दूसरा बॉक्स है, ये 2 यूनिट डायमेंशन का देखो ये तीसरा बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स, ये, और 2 यूनिट डायमेंशन का ये चौथा बॉक्स है. तो ऐसे 2 by 2 के 4 डब्बे बनेंगे. अगर आपने 3 यूनिट ले लिया, 3 यूनिट का मीनिंग है आपने यहां से लेके पूरा काउंट कर लिया, तो यहां से लेके पूरा काउंट किया, तो 3 यूनिट का एक बॉक्स बनेगा. तो आपको एक पैटर्न दिखना शुरू हो गया होगा. जैसे जैसे साइज बड़ी हो रही है स्क्वायर्स की, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कम हो रहे हैं. पहले क्या था? 3 into 3, फिर 2 into 2, फिर क्या है? 1 into 1. वैसे अब आप यहाँ बोलोगे 1 यूनिट डायमेंशन के तो बनेंगे 16 डब्बे. 16 मीन्स 4 into 4.
2 यूनिट का बोलोगे, 2 यूनिट का साइड बोलोगे, अगर ऐसा बोलोगे कि ऐसा डब्बा बनाओ 2 यूनिट का साइड, मतलब अंदर 4 बनने चाहिए। ऐसे कितने बनेंगे? 3 × 3 9 बनेंगे। 3 यूनिट का चाहिए तो 2 × 2 4 बनेंगे। 1 यूनिट का चाहिए, 4 यूनिट का चाहिए तो ऐसा एक ही बनेगा। अब एक बात पे ध्यान दो, डज इट लुक लाइक नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज लाइक एडिंग स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर. So we say number of squares in a symmetric grid. Symmetric grid is 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square, which is formula n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. इसको हाईलाइट करो, टेक 2 minutes, अच्छे समझो। Complete this, let me know. क्या सेंटेंस था मेरा? काउंटिंग स्क्वायर्स इज लाइक एडिंग स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके आप ऐड कर रहे हो जितना आपका ग्रिड है। ये किसमें था? सिमेट्रिक होने में। अब अगर सिमेट्रिक नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? अगर ग्रिड सिमेट्रिक नहीं है तो अब अगर ग्रिड सिमेट्रिक नहीं है तो यू हैव टू अप्लाई कॉमन सेंस। मैंने आपको भी दिखाया कैसे गिनते हैं। व्हेन द ग्रिड इज नॉट सिमेट्रिक, लेट अस से मैंने एक ग्रिड बनाया, व्हेन आई से नॉट सिमेट्रिक, साइड्स बराबर हैं सबके, नहीं तो स्क्वायर कैसे बनेगा? फर्क ये है 1 2 3 4 5 1 2 3। आप ऐसे देखोगे तो वर्टिकली आपके पास 4 डब्बे हैं और 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टली आपके पास 6 डब्बे हैं। इसको नॉन सिमेट्रिक कह रहा हूं। अदरवाइज ये वाली लेंथ और ये लेंथ और लेंथ सब बराबर है। अगर साइड्स बराबर नहीं होंगे, अगर गैप बराबर नहीं होंगे तो स्क्वायर बनेगा ही नहीं ना। सो साइड्स और गैप बराबर है, क्या बराबर नहीं है? नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस और नंबर ऑफ पार्टीशंस ये बराबर नहीं है। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी फॉर्म्ड? अगर आपकी ग्रिड है 6/4 की ग्रिड है, बनाओ हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी फॉर्म्ड?
तो आपको अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस वाली अप्रोच पे। डायमेंशन क्या है, अब ये मैटर जानना पड़ेगा। देखो, अगर मैं एक यूनिट डायमेंशन लेता हूँ, एक यूनिट डायमेंशन मतलब कि आप देखो हॉरिजॉन्टल ऐसे एक एक करके कितने डब्बे पड़े हैं आपके पास। हॉरिजॉन्टल आपके पास 6 डब्बे पड़े हैं और वर्टिकल कितने डब्बे पड़े हैं आपके पास, वर्टिकल 4। अगर आप एक एक यूनिट का साइड लोगे तो आपके पास 6 इंटू 4 24 डब्बे रखें। थोड़ा ध्यान से, अभी अगर आप दो दो यूनिट का साइड लोगे, 2 यूनिट का आप साइड लोगे, देखो मैं ऊपर से करता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो आपने जब साइड को बढ़ाया तो पहले 6 डब्बे थे, अभी कितने डब्बे हैं, 5। वैसे ही आप यहां ध्यान दो, लुक एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। दो दो यूनिट काउंट करना है मुझे, तो ये आपका एक बॉक्स रखा है वर्टिकल, ऐसा 2 बॉक्स रखा है वर्टिकल, ऐसा 3 बॉक्स रखा है वर्टिकल। तो आपने जब डायमेंशन को 1 की जगह पे 2 किया, 2 यूनिट का एक डब्बा लेना है, देखो आपके जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है कम हो गए, ये 6 से 5 हो गया, ये 4 से 3 हो गया, तो 15 डब्बे हो गए। आप जब 3 यूनिट का लोगे तो ऊपर रंगोली नहीं खेलना है, ये 5 जगह क्या बन जाएगा, 4, ये 3 जगह क्या बन जाएगा, 2, ऐसे 8 डब्बे हैं। अगर आप 4 यूनिट का डब्बा लोगे, 4 यूनिट का, तो ये एक एक कम हो जाएगा, 3, और ये कम हो जाएगा 1। अब और तो कम कर नहीं सकते, 0 हो जाएगा, तो ये आपका सबसे बड़ा डब्बा है, 4 यूनिट का डब्बा, ऐसे 3 बनेंगे। तो आपका आंसर आ गया 24 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3, 11, 11 प्लस 15 26, 26 प्लस 24 50 squares are there. There are 50 squares. तो ऐसा जनरल फॉर्मूला बना लो, अगर हॉरिजॉन्टल m है और वर्टिकल n है, m इंटू n प्लस m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस m माइनस 2 इंटू n माइनस 2। ये कब तक जाएगा, जब तक कोई एक वैल्यू 1 बन जाए उनमें से। Copy this down, comment down। ये आपने सीखा काउंटिंग स्क्वायर्स। चलो, how do we count rectangles? Let have a look at that. रेक्टेंगल्स इंक्लूड नहीं किया मैंने इसमें। चलो, रेक्टेंगल्स में यही कहता हूँ आपको, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। अब रेक्टेंगल के लिए ग्रिड जो है सिमेट्रिक हो नॉन सिमेट्रिक हो फर्क नहीं पड़ता। देखो, लेट मी ड्रॉ अनदर ग्रिड हियर। रेक्टेंगल में ना बॉक्सेस नहीं गिने जाते, रेक्टेंगल में लाइंस गिने जाते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट दैट मींस। काउंटिंग रेक्टेंगल्स, देखो
रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे मैंने इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया, तो मेरी वर्टिकल बाउंड्री आ गई, मैंने हॉरिजॉन्टल में इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये मेरा रेक्टेंगल बन के आ गया। फॉर अ रेक्टेंगल जितनी भी आपके पास वर्टिकल लाइंस हैं, गिनती यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देयर आर 7 वर्टिकल लाइंस, इनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो तो आपकी वर्टिकल बाउंड्री आ गई 1 2 3 4 एंड 5। तो आप ऐसा 5 में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो तो आपका हॉरिजॉन्टल बाउंड्री आ गया। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज वर्टिकल लाइंस कॉम्बिनेशन 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट है, रेक्टेंगल के ही अंडर में स्क्वायर भी काउंट होते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए रेक्टेंगल्स विथ अनइक्वल साइड्स, तो आप स्क्वायर कैलकुलेट करके माइनस करना पड़ेगा आपको। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी क्रिएटेड ऑफ अनइक्वल साइड्स, तो आपको स्क्वायर कैलकुलेट करके माइनस करना पड़ेगा। अदरवाइज केवल रेक्टेंगल्स बोला है तो आप ये कर सकते हो, रेक्टेंगल्स में लाइंस खींचे जाते हैं, गिने जाते हैं, नॉट बॉक्सेस। वर्टिकल लाइन 7 है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं 5 हैं, तो 7 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो तो वर्टिकल बाउंड्री आ गए, 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो तो हॉरिजॉन्टल बाउंड्री आ गए, तो टोटल बाउंड्री गिन के आपके रेक्टेंगल बन जाएंगे 7c2 into 5c2। अभी 7c2 is 7 into 6/2 21, 5c2 is 10, 21 into 10 आपके 210 रेक्टेंगल्स बनेंगे। यहाँ 210 रेक्टेंगल बनेंगे। अगर कोई कहेगा रेक्टेंगल बट नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल बट नॉट अ स्क्वायर, तो आपको करना पड़ेगा 210 माइनस, कि मैंने वही डायग्राम बनाया आपके लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, मैंने यही डायग्राम दोबारा बनाया आपके लिए। तो ऐसे 50 स्क्वायर बनेंगे। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर व्हिच आर नॉट स्क्वायर्स, 150 160, rectangles which are not squares is 160. Observe, learn all this, copy this down. I hope you have copied all of this down, counting rectangles and squares. Some questions, I'll give you 1.5 minute per question. Try. Even if this is a recording, take the given time and solve.
देखो 8 people have to be seated on rectangular table with 4 each on longer sides. जो rectangular table है it has 4 people on the longer side, तो 8 हो गए. There should be nobody here, nobody here. तो again imagine A को बोलता अपनी जगह ले ले. तो A जब इधर आएगा A will fill these 4 places and these 4 places are same. यहां जब आएगा तो बोलेगा I have got 4 options और मेरे opposite 4 options. जब A इधर आएगा A will say मेरे सामने 4 option, opposite 4 option. तो side does not matter. एक बार A ने कह दिया I will take this side. अब A के पास क्या है? Extreme right, extreme left, second right, second left. A has got 4 defined choices. 4 defined places हैं A के पास. एक बार A ने जगह धारण कर ली. I will sit here. अब ये A का राइट है, ये सेकंड राइट है, ये थर्ड राइट एंड सो ऑन सो ऑन. अब हर जगह की डेफिनेशन है. तो A के अलावा बचे कितने लोग? 7. तो बाकी जो B C D E F G H है उन सबके मिलाकर 7 factorial ways, A के 4 ways. तो 4 into 7 factorial ways you can arrange 8 people in this particular manner. इस तरीके से आपको उनको अरेंज करना है. तो आप क्या आएगा? 4 into 7 factorial ways. Moving on. अभी हमें 8 लोगों को बिठाना है. How many ways can 8 people be seated across a circular table if there are 9 identical chairs placed equally apart around the table? Number of people is 8. Number of chairs is 9. ये तो हमने पढ़ा ही नहीं थियोरी में. How do we approach this? Give it a try. डायग्राम की जरूरत है नहीं है, यू डिसाइड. ड्रॉ करना है क्या चेयर्स को, यू डिसाइड. डायग्राम मत बनाओ, ऐसा सोचो जो पहला पर्सन होगा ए, क्योंकि सर्कल है, उसको सब ऑप्शन एग्जिस्ट दिखेंगे. एक बार ए बैठ गया. अब आपके पास कितने लोग हैं? अब 7 लोग हैं. 7 people are there. And how many chairs you have? 8 chairs. और हर चेयर का अपना डेफिनेशन है. ए का राइट, ए का लेफ्ट, ए का डायगोनल एंड सो ऑन सो ऑन. तो आप क्या कर रहे हो? 8 जगहों में 7 लोगों को बिठाना है. तो डू यू रिमेंबर परम्यूटेशंस? 8 परम्यूटेशन 7. तो ये फॉर रेस्ट ऑफ देम, रेस्ट ऑफ द पीपल. ये किसके लिए? ए के लिए. अब 8p7 क्या होता है? 8 factorial upon 8 minus 7 factorial, which is basically 1 factorial. तो आपका final answer is 8 factorial. What is the formula for NPR?
हम NPR कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास चेयर ज्यादा हो, लोग कम हो, या लोग ज्यादा हो, चेयर कम हो। हमें सेलेक्ट भी करना है और हमें अरेंज भी करना है। We have to select and arrange people in their places. We apply permutation. बिना permutation के आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा हो जाए कैलकुलेशन, बट आंसर यही आएगा आपका। Commented answers clear है? Yeah, try this. Give it a try. Take 1 to 2 minutes. Try. आप ये नोटिस करो, व्हाट आर द सटल चेंजेस, स्मॉल चेंजेस बिटवीन दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर भी 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल है, 9 जगह हैं, बट ये चेयर्स डिस्टिंक्टिवली कलर्ड है। आप वो छोड़ो, 9 कलर तो छोड़ो, अगर एक चेयर ग्रीन है और बाकी सारे चेयर व्हाइट है या येलो है, बाकी सारे चेयर येलो है, अगर एक भी रीजन है नॉन सिमेट्री का, सीधा फैक्टर लग जाता है। यू ट्रीट ऑल ऑफ देम डिस्टिंक्ट। ये मत कहना सर बाकी सेम कलर के हैं। अगर एक भी चेयर का कलर अलग हो गया तो उस चेयर का राइट, उस चेयर का लेफ्ट, उस चेयर का अपोजिट, तो वहां से डेफिनेशन आ जाएगी। अगर एक भी रीजन है नॉन सिमेट्री का, यू ट्रीट ऑल ऑफ देम डिस्टिंक्ट। 9 के 9 कलर्ड है तो अलग सवाल है, अगर एक का भी कलर अलग है दे आर ऑल डिस्टिंक्ट। अब क्या कह रहे हो, मुझे मुझे 9 में से 8 जगहों पे लोग बिठाने हैं, 9 में से 8 जगह पे, तो व्हाट विल द आंसर लुक लाइक? 9 factorial upon 9 minus 8 factorial, which is 9 factorial. पिछले सवाल में आंसर क्या था? 8 factorial, क्योंकि चेयर्स आइडेंटिकल थे। पहले पर्सन का बैठना मैटर नहीं करता, यहाँ पे पहले पर्सन का बैठना भी मैटर करता है। मैं चाहूं तो मैन्युअली गिन लूं, ए के पास 9 ऑप्शंस होंगे, बी के पास 8 ऑप्शन, सी के पास 7 ऑप्शंस, एंड मल्टीप्लाई इन दिस मैनर। तो आपका आंसर वैसे भी 9 फैक्टोरियल आएगा अगर आप एक एक गिनो, क्योंकि दे आर ऑल डिस्टिंक्टिवली कलर। तो ए को सारे ऑप्शन डिस्टिंक्ट दिखेंगे, बी को सारे ऑप्शन डिस्टिंक्ट दिखेंगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। Observe that small change led to a different answer, entirely different answer.
In how many ways can 8 people be seated around a table if there are 7 identically colored chairs and one chair distinctly colored? अभी मैंने आपको बताया था एक भी रीजन है नॉन सिमेट्री का, तो आप बेसिकली ऐसा देखो, आपके पास 8 अलग-अलग चेयर हैं, 8 लोग हैं, यू ट्रीट इट लाइक अ लाइन, 8 अलग-अलग चेयर्स हैं, 8 अलग-अलग लोग हैं, 8 फैक्टोरियल, डन. Moving on. In how many ways can 5 Mexicans and 6 Americans sit across circular table with 11 equi-spaced chairs so that no 2 Mexicans are sitting next to each other? आप लोग ट्राई करो. कितने अमेरिकन हैं? 6. मैक्सिकन्स हैं 5. चेयर्स हैं 11. 11 चेयर्स हैं इक्वली स्पेस्ड. तो आइडेंटिकल होगा ऐसा अज्यूम करके आप स्टार्ट करोगे. assuming the chairs are identical, ये सोच के आप स्टार्ट करोगे. Try, take a minute or so. Because no 2 Mexicans should be together. आप इन पे बाद में ध्यान देना. You keep them aside. इनको बोलो बाद में बात करते हैं. You focus on these Americans. आप बताओ, चेयर्स मत गिनो, चेयर्स मत गिनो, फिर आपको कंफ्यूजन होगा चेयर्स कहाँ पर है. आप अगर 6 लोगों को अरेंज करने जाओगे on a circle, तो how many ways are there? n-1 factorial. तो आपने अमेरिकन्स को अरेंज कर दिया इन 5 फैक्टोरियल. अमेरिकन 1, अमेरिकन 2, अमेरिकन 3, अमेरिकन 4, अमेरिकन 5 एंड अमेरिकन 6. अब क्या होगा? Mexicans can occupy these positions either. Now every position is unique. ये position अमेरिकन 1 और 6 के बीच में है, ये position 3 और 4 के बीच में है, ये position 2 और 3. Every position is unique. अब आप कह रहे हो there are 6 positions, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. लेकिन मैक्सिकन कितने हैं? 5. So how can you select 5 places and arrange 5 Mexicans? तो आप 6p5 करोगे. 6p5, तो 5 factorial into 6 factorial upon 6 minus 5, 1 factorial. तो 1 factorial is 1. फिर आंसर is 5 into 6 factorial. 5 into 6 factorial.
Moving on. A square table has 2 seats on each side. A total of 10 people are there. In how many ways the seats of the table can be filled? क्या है अपने पास? Square table. The table is square. With how many seats on each side? 2 seats on each side. A total of 10 people are to be placed. तो लोग ज्यादा हैं, लोग ज्यादा हैं. In how many ways can these people be seated around the table? So give it a try. Take 2 minutes. बहुत छोटे छोटे वेरिएशंस हैं, सब सीखा आपने पहले ही. लॉजिकली स्पीकिंग आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आपका पहला स्टेप होना चाहिए दैट वी सेलेक्ट 8 पीपल. आउट ऑफ 10 आप 8 लोग सेलेक्ट कर लो. अब मान लो ये है A B C D E F G H, ये आपको आता है ऑलरेडी. जब A बैठने जाएगा तो A विल फील ऑल द साइड्स आर सेम. एक बार A ने कह दिया मैं इधर बैठूंगा तो A हैज गॉट 2 ऑप्शंस, लेफ्ट एंड राइट. तो A has got 2 options. एक बार A बैठ गया, once A is in his position, अब आपके पास क्या होगा? There are 7 defined places. तो 7 factorial आ जाएगा for others. ये बहुत एग्जाम्पल किए हमने, अब ऐसे वाले तो बहुत हो गए. तो what is 10C8? 10C8 is like 10C2 into 2 into 7. अब ये क्या है? 10 into 9 upon 2 into 1 into 2 into 7 factorial. Cancel, cancel. 10 into 9, 90. 90 into 7 factorial. ये आपका आंसर. नाइन्टी into 7 factorial. ये क्वेश्चन अभी हमने बनाया स्क्वायर टेबल एंड 10 पीपल. ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया. लेट्स मूव ऑन. ट्राई दिस. गिव इट अ ट्राई.
How many triangles can be formed with the following arrangement of red colored dots? डायग्राम की जगह कुछ और वर्ड्स का फॉर्मेशन हो सकता था, सेंटेंस हो सकता था. How many triangles will be formed with these red colored points? जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं. Take 2 minutes, give it a try. मैं लाइंस को नाम देता हूं आपके लिए, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी. अब मैं पहले आपको मैन्युअली एक एक करके दिखाता हूं सिलेक्शंस. लेट अस से मैं ए बी पे ध्यान दे रहा हूं. ए बी पे 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स हैं. इन 5 में से अगर मैंने कोई भी 2 सेलेक्ट कर लिए, कोई भी 2, मैंने इसको भी काउंट कर लिया, लेट अस से मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों को. तो अब मेरे पास यहाँ पे ध्यान दो, 1 2 3 4 और 5. बाकी बचे हुए 5 में से कोई एक लेना पड़ेगा. मैंने क्या किया, ए बी में से 2 सेलेक्ट किए और सी डी में से 1, बन गया ट्राइंगल. और क्या कर सकते हो आप सी डी में से 2 सेलेक्ट कर लो. देखो अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 में से मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं सी डी में से. अब ए बी में कितने पॉइंट बचे, देखो इसको मैंने किसका पार्ट काउंट किया, सी डी का. ए बी में कितने बचे, 1 2 3 एंड 4. 4 में से कोई एक ले लो तो आपका ट्राइंगल बन ही जाएगा. अब इसमें ये वाला पॉइंट बाय डिफॉल्ट काउंटेड है. मान लो आपने ऐसा इनको सेलेक्ट कर लिया, ये आपका ट्राइंगल बन गया. आपने ऐसा इनको सेलेक्ट कर लिया तो आपका ये ट्राइंगल बन गया ऐसा. तो ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर लिया आपने, यू हैव कंसीडर्ड एवरीथिंग विद इन दैट. तो मुझे ऐसा लग रहा है 5C2 is 10 into 5, ये 50 ट्राइंगल्स हुए. 6C2 is 6 into 5 upon 2, तो 15 into 4, तो ये 60 ट्राइंगल हुए. तो टोटल ट्राइंगल हो गया 110. ये मैंने क्या लॉजिक लगाया, व्हाट कॉमन सेंस आई एम अप्लाइंग, बिकॉज 2 ही लाइंस हैं और एक लाइन पे 2 पॉइंट से ऊपर आप ले नहीं सकते. यू कैन नॉट टेक मोर देन 2 पॉइंट्स व्हाइल फॉर्मिंग अ ट्राइंगल. तो मैं क्या विजुअलाइज कर रहा हूं, ए बी में से 2 पॉइंट ले लिए और सी डी में से 1, सी डी में से 2 पॉइंट ले लिए और ए बी में से 1. नाउ अनदर वे टू लुक एट दिस, आई डू नॉट नो आंसर मैच करेगा कि नहीं. आंसर मैच करना चाहिए. तो मैंने क्या कहा उससे पहले भी, इफ योर मेथड्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट, आंसर्स मस्ट मैच. मेरे पास टोटल पॉइंट है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. 10 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करना शुड बी अ ट्राइंगल, शुड बी. लेकिन जो लाइन ए बी है, 1 2 3 4 और 5 में से 3 सेलेक्ट करना ट्राइंगल कैसे बन सकता है. सी डी में कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 में से 3 सेलेक्ट करना ट्राइंगल कैसे बन सकता है. तो 10C3 इज ऑल ट्राइंगल्स. अब देखो ये वाला पॉइंट एक ही बार काउंट होगा. जब आप 10 गिन रहे हो तो कैसे गिन रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक ही बार काउंट होगा. लेकिन जब आप ए बी गिनोगे तो अलग काउंट होगा, ये सी डी गिनोगे तो अलग काउंट होगा. ये माइनस कर दिए. तो व्हाट इज 10C3, 10 9 8 3 2 1. तो ये कैंसिल हो गया आपका 3 बार, ये कैंसिल हो गया आपका 4 बार, तो 120 120. व्हाट इज 5C3, 5 into 4 into 3 upon 3 into 2 into 1. देखते हैं प्लस माइनस मिस्टेक अगर होती है तो उसे करेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी. ये हो गया आपका 3 कैंसिल 2 कैंसिल, तो 10 तो यहीं पे आ गया, 10 तो यहीं हो गया अपना. अभी 6C3 भी तो माइनस करना है. तो बेटा कुछ गड़बड़ करी हमने. 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1. तो ये आपका कैंसिल 3 टाइम्स, ये आपका कैंसिल 2 टाइम्स, तो ये 2 into 2 into 5 is 20. तो मेरा आंसर यहाँ पे 90 आ रहा है और यहाँ पे 110 आ रहा है. तो लेट अस सी, इसमें कुछ हमने गड़बड़ करी है या इसमें हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या.
should we take this as 11 points? अगर मैं इसको 11C3 लेता, if I had taken this as 11C3, तो होता 11 into 10 into 9 upon 3 into 2 into 1, कैंसिल 3 बार, कैंसिल 5 बार, तो अब तो ये आखिरी में 5 आ जाता है, यहाँ तो 0 आ रहा है। ये कैलकुलेट करते हैं एक बार। 5C2 is 5 into 4 upon 2 into 1, 10, 10 into 5, 6C2, 6 into 5 upon 2, 15, 15 into 4, 60। ये तो करेक्ट कैलकुलेशन है। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है वी हैव डबल काउंटेड समथिंग। इसमें कुछ ऐसे ट्रायंगल जो डबल काउंट हो गए हैं, देखो अभी मैंने ऐसा इमेजिन करो, मैंने ऐसा इमेजिन करा, देखो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, ये मेरा ट्रायंगल बन गया। अगली बार जब मैंने इस लाइन पे सेलेक्ट किया, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया, तो कुछ कुछ ट्रायंगल बेटा इसमें डबल काउंट हो गए। देखो इसमें कुछ कुछ ट्रायंगल डबल काउंट हो गए। कौन से ट्रायंगल डबल काउंट हो गए? बीच वाला सेलेक्ट करना ही करना है, बीच वाला सेलेक्ट करना ही करना है। अब बाकी बचे कितने इसमें? 4, इसमें कितने बचे? 5, तो 4 इंटू 5, आपके 20 ट्रायंगल डबल काउंट हो गए हैं, 20 ट्रायंगल डबल काउंट हो गए। तो अब आपका आंसर मैच हुआ, देखो दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो लकीली मैंने आपके लिए सेकंड मेथड चेक कर लिया, मैं अभी प्रूव किया आपके लिए कौन सा ट्रायंगल डबल काउंट हो गया। देखो मैं जब ए बी से गिनता हूं, व्हेन आई काउंट फ्रॉम ए बी, मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट काउंट किया, ये पॉइंट और इसको ऐसे काउंट किया। जब मैं सी डी से काउंट करता हूं, मैंने इन दोनों काउंट किया और इसको काउंट किया। तो ऐसे ट्रायंगल डबल काउंट हो गए हैं जिसमें बीच वाला पॉइंट आएगा। तो बीच वाला पॉइंट अगर आ चुका है, तो अब आपको ए बी में से एक पॉइंट चाहिए, 4 ऑप्शन है, सी डी में से एक पॉइंट चाहिए, 5 ऑप्शन है। तो ऐसे 20 ट्रायंगल डबल काउंट हो गए हैं, तो यू मस्ट सब्ट्रैक्ट दोस 20, 90 इज द आंसर। सो आई हैव अ फीलिंग ऐसा मैन्युअली करने में गलतियां ज्यादा हो रही हैं, ऐसा मैन्युअली करने में। ओवरऑल कॉम्बिनेशन 3 करने में कोई गलती नहीं हुई। देखो स्टिक विद दिस। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स करा रहा था, सर्कल्स ट्रायंगल्स करा रहा था, वहां भी आपसे यही कह रहा था कि जो ओवरऑल है कॉम्बिनेशन 3 वाला, कॉम्बिनेशन 4 वाला, दैट इज अ स्लाइटली बेटर अप्रोच। Copy down the approach, look at the mistake we made, and we move on from this. How many distinct 5 by 5 tables are there such that each entry is either 0 or 1, and each row, the sum of each column is 5? हर रो का और हर कॉलम का सम 5 है। ये इस तरह का सवाल आ चुका है। IIM कलकत्ता एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है कॉल्ड एज PGDM, PGDBA, PGDBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड कोर्स है, पीपल हु हैव डन स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन और हैव हैड BSc MSc मैथ्स, या उन्होंने बिजनेस एनालिटिक्स में 2-3 साल काम किया है, फॉर दोज पीपल। थोड़ा टेक्निकल एग्जाम होता है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पॉइसन रेशियो, थोड़ा बहुत मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, वो सब आ जाता है इसमें। तो गिव इट अ ट्राई। ये वैसे सवाल नहीं है, नॉट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्योर PNC है, गिव इट अ ट्राई।
देखो क्वेश्चन है, देयर इज अ 5x5 टेबल। ग्रिड की बात कर रहे हैं, टेबल की बात कर रहे हैं, 5x5 ऐसा टेबल है। अब इस पूरे टेबल में हर जगह पे या तो आपको 0 इनपुट करना है, 1 इनपुट करना है। इस तरीके से करना है कि जब रो को ऐड करेंगे एडिशन 4 आना चाहिए, कॉलम को ऐड करेंगे एडिशन 4 आना चाहिए। इसका मतलब है आप वर्टिकल देखो चाहे हॉरिजॉन्टल देखो, 4 बार 1 होना चाहिए। अगर ये 4 बार 1 आ गया तो हॉरिजॉन्टल एडिशन 4 आ गया, लेकिन वर्टिकली आप देखो क्योंकि 0 पहले आ चुका है तो बाकी 4 क्या होंगे, 1। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कभी भी 2 0 नहीं आ सकते इन अ रो और इन अ कॉलम। यू कैन नेवर हैव 2 zeros, क्योंकि अगर 2 0 आ गए एक ही रो में, एडिशन 4 से कम हो गया। मान लो ये 0 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 1 1 होंगे, क्योंकि यहाँ 0 है बाकी सारे 1 1 1 होंगे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में कभी भी 2 0 साथ में नहीं होने चाहिए। हाउ कैन वी अचीव दिस? तो सबसे पहली लोगों के मन में आती है सर डायगोनल में डाल दो। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये दोनों डायगोनल में है क्या? देखो ये दोनों डायगोनल में है क्या? नहीं ना। देयर कैन बी मैनी मोर। यहाँ मैंने 0 डाल दिया, देखो क्या ये तीनों डायगोनल्स में है? नो। तो जो पहला इंस्टिंक्ट है थोड़ा उसको हैंडल करो, कंट्रोल करो, माइट बी इनकरेक्ट। मैं आपको एक एक करके मेथोडिकली सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं, फोकस। 1 2 3 4, एक और लगाते हैं 5। यू इमेजिन करो सिमेट्रिक है ये। अब जब पहला 0 आएगा, पहला 0, उसके पास 25 डब्बे हैं। मैंने मान लो यहां पुट कर दिया, पहले 0 के पास 25 डब्बे थे, 25 चॉइसेस थे, मैंने यहां पुट कर दिया। नाउ कैन आई से जो सेकंड 0 है वो यहां नहीं आएगा और सेकंड 0 यहां नहीं आएगा। तो अब देखो आपने 25 में से कितने डब्बे कट कर दिए, एक तो कुछ 0 है और आपने 8 डब्बे कट कर लिए। तो 25 में से अगर आप 9 डब्बे कट करोगे तो बाकी 16 में सेकंड 0 आ सकता है, सेकंड 0। कैन आई से अगर मैंने सेकंड 0 को यहां रखा, थोड़ा ध्यान देना आप, मैं अभी और कितने बॉक्सेस कट कर रहा हूं, तो 16 तो मेरे पास ऑलरेडी थे, ये एक मैंने और माइनस कर दिया, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 16 में से 7 डब्बे माइनस कर दिए, बचे कितने, 9। जो थर्ड 0 आएगा उसके पास 9 डब्बे बचे। देखो पहले वाले के पास 5 स्क्वायर, दूसरे के पास 4 स्क्वायर, तीसरे के पास 3 स्क्वायर, जब चौथा आएगा तो वो होगा 2 स्क्वायर, और जब पांचवा आएगा तो उसका एक ही डब्बा बचेगा। अब ये क्या लिखा है मैंने, कैन राइट दिस एज 5 इंटू 5, 4 इंटू 4। क्या करूं देखो आप समझो, 3 इंटू 3, ये 4 क्या होता है, 2 इंटू 2, और ये 1 क्या होता है, 1 इंटू 1। कैन आई से माई आंसर लुक्स लाइक 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब एक मेरे को बात बताओ, जब आपने सब डब्बे रख दिए, डज इट मैटर पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? डब्बे तो डब्बे हैं, सर्कल सर्कल है। तो अब मैंने आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी रिमूव करने का, आइडेंटिटी हटाने का। व्हेन थिंग्स आर आइडेंटिकल हम क्या करते हैं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। मेरा आंसर था 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, तो आंसर इज 120। ये काफी इजी तरीका है क्वेश्चन को समझने का। आपने कहा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 2 0 नहीं आ सकते,
लिखो इसे, समझो। बाय 5 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हो वो भी समझो। मूविंग ऑन। दिस इज द पास्ट कैट क्वेश्चन, तो एज्यूम आप ट्राई करोगे बनेगा आपसे। गिव इट अ शॉट। In a chess competition involving some boys and girls of a school, every student had to play exactly one game with every other student. It was found that in 45 games, both players were girls, and in 190 games, both players were boys. The number of games in which one player was a boy and the other one was a girl is। अभी क्वेश्चन में क्या डिस्टिंक्शन है? बॉयज एंड गर्ल्स के बीच हमें स्पोर्ट्स करवाने हैं, गेम्स खिलवाने हैं। ऐसा क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर्स में आया है उसमें सीनियर और जूनियर भी थे, तो बॉयज एंड गर्ल्स के गेम आपस में और सीनियर जूनियर के गेम आपस में, सीनियर सीनियर के गेम आपस में, तो 2 लेयर और ऐड हो गए। तो अभी कैट में क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट वही है, परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, बेसिक है, बट लेवल कैसे बढ़ा रहे हैं? बाय इंक्रीजिंग सच वेरिएबल्स, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो क्या कह रहे हो आप? 45 गेम्स में दोनों लड़कियां थी। अब अगर नंबर ऑफ गर्ल्स x है, आप कोई भी 2 लड़कियां सेलेक्ट कर लो तो एक गेम हो गया। हाउ डू वी राइट nc2 n into n minus 1 by 2 into 1? आप कह रहे हो ये 45 है, गलती से भी आप क्यों सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक? क्या जरूरत है? ये 10 का मल्टीपल है, ये 10 है तो ये 9 है तो ये 90 है, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 10। आपने बॉयज के लिए क्या कहा? अगर द नंबर ऑफ बॉयज इज y, आप कोई भी 2 लड़के सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको हर किसी के बीच में गेम खिलाना है। अगर रमेश और सुरेश के बीच में गेम हुआ तो सुरेश और रमेश दोबारा थोड़ी गिनोगे आप। सो y कॉम्बिनेशन 2, एक पेयर अगर बन गई, 1 पेयर इज वर्थ 1 गेम ऑफ चेस, तो yc2।
it will be y into y minus 1 by 2 into 1 which is 190. अब ना थोड़ा सा पैनिक मेरे को भी एग्जाम में होगा अगर ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यू मेरे सामने आएगी तो वन वे टू हैंडल दिस इज, ये भी मैंने आपको बहुत पहले दिखाया है, जो 380 है वो y के स्क्वायर के नजदीक है। अगर y 20 हो जाता तो आपका आंसर आ जाता, क्योंकि y स्क्वायर में से y कम कर तो डेफिनेटली 380 इज क्लोज टू स्क्वायर ऑफ y। आप अगर 19 रख के चेक करते तो आपकी वैल्यू 380 से कम हो जाती। क्यों? 19 का स्क्वायर होता ही 361 है, तो कम तो नहीं हो सकता। आप अगर 21 रख के देखोगे तो आगे वैल्यू चली जाएगी। यू कैन चेक दैट ऑल्सो। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 20 बॉयज आर देयर। अब अगर एक लड़का सेलेक्ट होगा और एक लड़की सेलेक्ट होगी तब तो एक चेस मैच होगा बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल। तो in how many ways I can select one girl? 10 ways. In how many ways can I select one boy? 20 ways. In how many ways can a game be played between a boy and a girl? 200 ways. There are 200 games played between a boy and a girl. Observe, take a minute or so, copy this down. Good. Let us try another problem. अच्छा, theory है. Theory we'll pick up tomorrow. New concepts, new theory. ये है आपका concept of distribution and group formation. थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कैट में। इनफैक्ट पिछले 4 साल मैंने कम से कम ऐसे 3 सवाल देखे हैं कि 15 बलून्स हैं, 4 फ्रेंड्स में बांटने, अगर हर किसी को मिनिमम 2-2 बलून्स मिलने हैं, बलून्स आइडेंटिकल, तो हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। ये डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप फॉर्मेशन थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। डिटेल में करेंगे, मैं आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन सिखाऊंगा, तो कभी कस्टमाइज करना पड़ा तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। We'll pick it up tomorrow.